Hello everyone. In this video lecture series, I am going to talk on microprocessor and interfacing devices. It is also known as peripheral devices. So let's start with the first topic, that is part 1, which is nothing but the introduction of microprocessor. So what is microprocessor? Now you can see in microprocessor there are two words. One is micro and another is processor. So what is meaning of micro? Micro means small. So microprocessor is very small. And what is processor? It is processor because it processes the data for taking decisions and for controlling the activities. So microprocessor is a digital device. Microprocessor is digital device means it understands the language of only zeros and ones. Its every word consists of sequence of zeros and ones because it is digital device. Microprocessor is fabricated on small chip. So microprocessor is nothing but an integrated circuit, and that is the reason it is said that it is micro. Why micro? Because it is on IC. You can see, you might have seen this integrated circuits on in many circuits. It is controlling unit of microcomputer. What is microcomputer? Microcomputer is a small computer, and microprocessor controls the microcomputer. So what is microprocessor? Microprocessor is basically a brain of microcomputer. Or even if you take a processor of mobile or processor of our computer system, it is nothing but a brain of that system. Okay. So it is capable of performing arithmetic and logical operations. Arithmetic operations means microprocessor is capable of performing addition, subtraction, multiplication, division. It can also perform logical operations like and, or, etc. It is having the ability to communicate with other devices connected to it. Then what is peripheral devices? अब ये peripheral devices क्या है? तो देखो इसमें क्या है, periphery is a word available in peripheral. What is meaning of periphery? Periphery means जो हमारे in and around होता है उसको हम क्या बोलते हैं, periphery. तो जो इन एंड अराउंड डिवाइसेस हम लोग प्रोसेसर को कनेक्ट करेंगे, उस डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस. अब हम कंप्यूटर को क्या क्या कनेक्ट करते हैं, हम लोग माउस कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, स्पीकर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है. तो ये सारे डिवाइसेस क्या हो गए, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, यू कैन सी सम एग्जांपल्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई, माउस, वेबकैम, यूएसबी. So all these devices are peripheral devices. Now this is block diagram of basic microcomputer system. As I told you earlier also, microcomputer क्या है? Microcomputer एक छोटा सा कंप्यूटर है और वो कुछ इस तरह से दिखता है. You can see here, this is a microcomputer. You can see here a keyboard and so many integrated circuits. ICs are connected and there are connections with each other. So what is the main पार्ट ऑफ माइक्रोकंप्यूटर सिस्टम? माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर ये माइक्रोकंप्यूटर सिस्टम का क्या है, ब्रेन है. और उसको क्या क्या कनेक्टेड है, व्हाट इज कनेक्टेड आउट देयर? देयर आर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी इज कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर. So which kind of input, which input devices are connected? Like keyboard, keypad, mouse, microphone, etc. These are input devices. ओके क्योंकि यहाँ से हम लोग डेटा भेजेंगे माइक्रो प्रोसेसर को. प्रोसेसर को जिस डिवाइस से डेटा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस. और जिस डिवाइस पे डिस्प्ले होगा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस. सो विच आर आउटपुट डिवाइसेस? लाइक एलसीडी डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, एक्सेट्रा. दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस. Now this is important concept of microprocessor, that is bus structure. अब ये bus क्या है? What is bus? You can see here CPU. CPU means, what is CPU? CPU क्या होता है, हमारा माइक्रोप्रोसेसर की CPU है. या फिर कंप्यूटर या मोबाइल के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो प्रोसेसर इज अ CPU. और वो किस किस को कनेक्ट है, कनेक्टेड है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द CPU. We use buses for connection. What do we use? We use bus for connection.
ये बस क्या है? व्हाट इज बस देयर? ओके, बस इज कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। आपने ये सर्किट में बहुत बार इस टाइप का एक केबल देखा होगा, फ्लैट रिबन केबल बोलते हैं इसे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट बस। सो व्हाट इज बस? बस इज अ पाथवे फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। बस क्या है? डेटा कैरी करने का एक पाथ है, एक रास्ता है। हमारा बस कहाँ से चलता है? कोई भी बस, लेमैन का बस कहाँ से चलता है? रास्ते से चलता है। सो इट इज अ पाथवे। ओके, bus is used to carry data and signal, okay, and data and address, sorry. Bus is bundle of wire that carries data, very simple. आप देखिए यहाँ पे, what is this? This is bundle of wires. It is a bunch of wires and it is known as bus. Because bus, what is bus? Bus is something that carries data. अब डेटा किस फॉर्म में है? माइक्रो प्रोसेसर का डिजिटल डिवाइस है तो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। फिर 0 और 1 यानी क्या है? लॉजिकली देखा जाए तो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट है। 1 इज इक्विवेलेंट टू 5 वोल्ट एंड 0 इज इक्विवेलेंट टू 0 वोल्ट। अब ये वोल्टेज कहाँ से ट्रांसफर होगा? ऑब्वियसली वायर से ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वायर क्या हो गया हमारा? बस हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड डेटा। अब बहुत बार ये दोनों वर्ड्स हम लोग सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, जिसमें कि again and again we will come across these two words, that is address and data. So all of you know that your mobile has memory, your computer system has memory. Okay, so memory consists of registers. किससे बनी होती है memory? Memory is stack of registers. Registers एक के ऊपर एक रख के क्या बनता है? Memory. And registers consist of flip-flops. What is flip-flop? Flip-flop is a memory cell, basic building block of memory. Flip-flop क्या है? It will save either 0 or it will store either 0 or 1 at a time. So what is flip-flop? Flip-flop is a basic building block of memory. फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करके क्या बनता है? रजिस्टर, और रजिस्टर कनेक्ट करके क्या बनेगा हमारा? मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने आई हैव शोन यू वेरी सिंपल 4 register memory only. This is register 1, register 2, register 3 and register 4. So these are 4 registers. So memory size is only 4 register. Okay, now these flip flops can store data. So what is this 11001010? So flip flop is a digital device. As I told you, it will either store 0 or 1 at a time, 1 bit at a time. तो ये जो अंदर स्टोर किया हुआ है फ्लिप फ्लॉप के, जो अंदर सेव है वो क्या है? डेटा है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? एड्रेस भी चाहिए। एड्रेस किसका चाहिए? रजिस्टर का एड्रेस चाहिए। व्हाई डू वी नीड रजिस्टर एड्रेस? नाउ सी, let's take an example. Suppose there are 4 flats. Okay, this is one flat, second flat, third flat and fourth flat in one building on one floor. Okay, and now we have to address these 4 flats by using only 2 bits. तो हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? एड्रेस चाहिए, अदरवाइज हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें समझ में नहीं आएगा। सो इट विल बी 00, 01, 10 and 11. So this is how we can address these 4 flats. तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे पास भी ये 4 flats है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 and रजिस्टर 4. तो इसे भी हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? We will address them like this. The 00 will be the address of this register 1, then 01, then 10 and then 11. So these are addresses of these registers. So see, what is data? This red color, whatever is stored in red color is data that is stored inside the register, that is inside the memory location. Okay, एक रजिस्टर को क्या बोलेंगे? 1 memory location. इस रजिस्टर को क्या बोलेंगे? 1 memory location. Okay, और ये जो बाहर है 0001, 1011 क्या है? These are addresses of these registers. Okay, now let's see, suppose there is a memory consist of 8 registers. अब ये 4 register का है, तो 8 registers का हुआ तो एड्रेस कैसे वैरी होगा? Again, it is a digital device, so we can address by only using zeros and ones. तो हमारे एड्रेसेस कैसे वैरी होंगे? It will vary from 000 to 111. इसका मतलब ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस होगा और ये
इसका एड्रेस होगा एंड सो ऑन. एड्रेस ऑफ थर्ड रजिस्टर विल बी 0 1 0 and so on like this. Okay, then what is address bus? What is bus? Bus क्या है? Bundle of wire that carries data. Data means bits 0 and 1. तो जो बस एड्रेस कैरी करती है उसे एड्रेस बोलेंगे और जो बस डेटा कैरी करती है उसे डेटा बोलेंगे. So address bus is used to carry address, and number of lines in the address bus determines the number of physical memory location. So see, number of lines in the address bus. Now there this is 2-bit address. तो ये 0 एक वायर पे फ्लो होगा और ये 0 एक वायर पे फ्लो होगा. तो ये एड्रेस फ्लो करने के लिए हमें कितनी वायर्स की जरूरत है? अगर रजिस्टर 1 चूज करना है तो 0 0 2 वायर ही चाहिए. तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ लाइंस. इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लाइंस. और नंबर ऑफ वायर्स इन एड्रेस बस डिटरमिन द नंबर ऑफ फिजिकल मेमोरी लोकेशंस. तो दो अगर हमारे पास बिट्स है तो वी कैन make combination of zeros. How many combinations of zeros and ones we can make? 4. तो कितने मेमोरी लोकेशन हम लोग एड्रेस कर सकते हैं? 4. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So this number of lines will determine how many memory locations we can address. जैसे यहाँ पे कैसे है? 3 लाइन्स है. 3 लाइन्स है तो हम लोग कितने लोकेशंस एड्रेस कर पाए? 8 मेमोरी लोकेशंस. अगर हमारे पास 4 बिट्स होते, 4 लाइन्स होती, 4 वायर्स होते तो हम लोग कितने मेमोरी लोकेशन एड्रेस कर पाते? 16. So there is a relation of 2 raised to power n is equals to number of memory location that can be addressed. Okay, where n is number of wires. And address bus is always unidirectional. Okay, and next is data bus. What is data bus? Data bus carries data, and right now just remember that data bus is bidirectional. So in the next video again I am going to explain this address, data and bus concept in detail. Now how does microprocessor fetch data from memory? So remember, whenever we write any program for any computer, that program is always stored in the memory. जो प्रोग्राम हम लोग प्रोसेसर के लिए लिखते हैं वो हमेशा मेमोरी में स्टोर होता है. और प्रोसेसर क्या करता है? जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है वो एक एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लाता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है. So this portion you can see, this portion is, this is your microprocessor. Now don't get into the details because we did not study this yet, but just understand this is microprocessor or this is connected to memory. And these are bits, these are words or instructions, you can say these are saved in this memory, different memory locations. Okay, अभी माइक्रोप्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन, ये जो बाइट है 1 0 1 1 1 1 1 1, ये फेच करना है मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में ट्रांसफर करना है. तो कैसे करना, कैसे करेगा? तो अगर ट्रांसफर करना है तो इसको एड्रेस पता होना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर को. तो सपोज इस लोकेशन का एड्रेस है 2005, यानी 2005 इस एड्रेस पे ये डेटा बाइट स्टोर किया हुआ है. तो प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर विल ट्रांसफर दिस 2005 on this address bus. This is address bus. It will transfer this 2005 on this address bus to memory. कैसे भेजेगा? Let's see. This is 2005. It is flowing to the address bus and it is going towards memory. अब ये करने के बाद what is stored? This is data. What is this? This is data. After sending this address, now this data will flow on data bus. ये क्या है? Red color. What is this red color bus is? This is data bus. See, this is data bus. Now this data should flow on data bus. तो कैसे फ्लो होगा? एड्रेस जाने के बाद ये देखो डेटा इज फ्लोइंग ऑन द डेटा बस लाइक दिस एंड इट इज गोइंग वेयर इट इज गोइंग. नाउ इट हैज गॉन टू द इंटरनल डेटा बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड देन फ्रॉम हियर इट विल एंटर इनटू instruction decoder, and then this instruction decoder decodes this instruction. Decodes matlab it will find out what is the meaning of this bit pattern, what it means, whether it is and, it is or, क्या करना है, इसका मीनिंग फाइंड आउट करेगा और मीनिंग फाइंड आउट करने के बाद it will execute. So this is how microprocessor communicate with memory. Communicate with memory means how it, now what it is doing in this activity, it is reading data from memory.
Reading data means it is transferring data from this memory location. What is this? These are registers. Okay, these are register. It is transferring a data from memory to प्रोसेसर. इसके लिए प्रोसेसर को क्या करना पड़ा, उसे एड्रेस भेजना पड़ा. तो पहले वो एड्रेस भेजेगा और फिर वहां से डेटा जाएगा. So I hope you understood the basics of microprocessor. Thanks for watching.